मेरा नाम हरकीरा सिकंद धावा है। मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स में मैंने किया है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। एंड दिस गेटिंग द 10th रैंक मेरे लिए बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट मैं मानता हूँ। मैं बहुत देर से आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग इनटू द इंडियन सिविल सर्विसेज। माय ड्रीम वाज टू गेट इनटू इंडियन फॉरेन सर्विस। एज फार एज माय मेथड इज कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा तरीका था पढ़ने का, मैंने मोस्टली स्कॉलर्स नेट से, इंटरनेट से, विकीपीडिया, गूगल, ऐसे अन्य सोर्सेज से मैंने इकट्ठे किए। I used a lot of sources. I didn't stick to any one series of notes or books. I tried to get more multiple views. तो मैंने ट्विटर से भी और इंटरनेट से जनरली मैंने कमेंटेटर्स के व्यूज जो थे इंटरनेशनल रिलेशंस पे, आई टुक नोट्स ऑफ दोज, मैंने वो लिखे, तो वो मुझे बहुत काम आए। PSIR में जो थ्योरी है उसमें शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स जो हैं वो मुझे काफी अच्छे लगे, दे वर गुड। एंड साथ में in as far as optional is concerned, PSIR, मुझे only ideal हैं PSIR के, वो I found them quite good, only IES. And then other than that जो GS था, जनरल स्टडीज में मैंने जो सारे टॉपिक्स दे रखे हैं यूपीएससी ने सिलेबस में GS 1 से 4 के बीच में, मैंने उन पे डेडिकेटेड 4-5 पेज के नोट्स बनाए थे। आई हैड मेड फ्रॉम विकीपीडिया, फ्रॉम यूजिंग सर्टेन कोचिंग वेबसाइट्स लाइक इनसाइट्स, एंड आई हैड कंपाइल्ड सम नोट्स। मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे, तो मैंने कोशिश ये करी थी टॉप GS के सिलेबस में यूपीएससी ने मेंशन किया है उसके ऊपर मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल तो हो कि मैं उस पर कोई आर्ग्यूमेंट बनाऊं, सो आई कैन एटलीस्ट हैव सम आर्ग्यूमेंट इन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड दैट वर्कड। GS 4 की जहां तक बात है, which is ethics and aptitude, it's very important paper. There I did a lot of case studies as practice, and I also found that the theory was very much scoring. I found the theory seemed to be more scoring than the case studies, at least in my experience, because the questions they provided enough space. इतनी जगह थी वहां पे कि आप examples देके examiner को impress कर सकें. That's good. And essay, I wrote very sort of philosophical essays, not बहुत ज़्यादा structured नहीं, बहुत formal नहीं, but थोड़े से informal, थोड़े से literary, थोड़े से open-ended flowing, ताकि when the person is reading the essay, जब वो पढ़े तो उनको एक लय मिले, एक flow मिले एक topic के ऊपर. So that I found is good for essay. Generally मैं ये कहूँगा सबसे important चीज़ इस एग्जाम में है, because I will say that completing the examination, completing all the answers, that is a very big challenge. And if it is possible, do as much writing practice as possible. Like if you can get some UPSC type sheets in the market which look like the answer scripts, and uspe aap you just write out like questions. First you can do untimed, then you can time them also. That way you will have more confidence. And then please, when you are writing the answers, do not get hung up on any one answer. किसी भी एक आंसर पे ज्यादा टाइम ना स्पेंड करें, चाहे आपको उस पे काफी ज्यादा डिटेल भी आता हो, because then that's a trap. आप उसको sufficient good average करके छोड़ दें, conclude करें, फिर आगे बढ़ें. Because I have seen the biggest hurdle is completing all the questions. जिन्होंने क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए, चाहे आपको लगे कि क्वालिटी इतनी बढ़िया थी या नहीं थी, आप पाएंगे कि आप यू आर इन अ बेटर पोजीशन, एंड रादर देन राइटिंग वेरी गुड आंसर्स एंड देन बाद में फिर आप 4-5 क्वेश्चन छोड़ दो. सो आई वुड सजेस्ट गेट फास्ट, गेट गुड राइटिंग स्पीड, गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू होल्ड योर पेन. इफ यू नीड टू फिक्स इट, अगर आप इस तरह पेन पकड़ते हैं उससे आपको दर्द होती है, अगर आपके रिस्ट में थकावट होती है, इफ यू गेट फटीग्ड, तो आप नेट पे देखें, you will see some videos, they can show you how to change your handwriting, how to change your grip, so that aapko you don't have any fatigue. Then on the day of the exam, I would suggest not have anything too heavy in the morning. Maybe have a small piece of bread and some curd, but don't take too much heavy food, otherwise you might have a bit of nausea or anxiety. And between the papers, have a light snack or have a bit of like home cooked food, but don't go in for too much of like caffeinated drinks, because that can, usse fir aap bahut zyada
ओवर एक्टिव भी हो सकते हैं, फिर आपका माइंड फोकस ना रहे उस पर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड सजेस्ट इज दैट अगर आपको, इफ यू रियली विश टू एंटर पब्लिक सर्विस, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप एक सिविल सर्वेंट बने, तो आप टेम्पररी फेलियर्स को, सेटबैक्स को अपने स्ट्राइड में लें. डोंट गेट काउड डाउन, डोंट गेट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ इट. वो फेलियर आपके ऊपर से पास करके हट जाएगा एंड देन यू कैन मूव अहेड. If you are sincere and if you are truly dedicated, you can clear this exam, and my best wishes will be always with all of you. And then secondly, as regards prelims, I would suggest that जो standard books हैं, जैसे कि अगर modern history में spectrum है, या अगर किसी के पास कोई GS की manual है जो आपने पहले पढ़ी है, whatever you have done earlier, you please revise that. And if you must you can look into koi compilations. Some coaching institutes like I believe Insights or IES Baba and others, lot of them come out with lot of material. So pick a few of them. I would suggest not more than 2, or if you want 3. And they will have some special issues. अभी भी आएंगे इस प्रीलिम के लिए भी वो आएंगे, जैसे कि स्पेशल एडिशन फॉर environment for prelims or special edition for art and culture. So that can have a very good ROI. So if you are very close to the exam and you have not done traditional sources, या आपने अगर मेन जो बड़े टॉपिक्स नहीं करे हैं, तो आप अभी फिर ये compilations जितने भी पढ़ सकते हैं पढ़ लें. Read as many compilations because they have a lot of ROI. So you can possibly clear the prelims even without having a strong fundamentals. So in that case, if you are doing this strategy, अगर आप ये कर रहे हैं, you have to be a bit diversified. क्योंकि I have noticed that UPSC at least has not given like questions which are from, there's not one coaching institute which will give you everything. So if you want to have a reasonable chance, at least make 2 sources, possibly 3 if that's the best case. जो अभी prelims आ रहा है उसमें, like I said, day of the exam, don't take anything heavy in the morning. If you have to take some tea, green tea is my suggestion. Don't take coffee or a lot of caffeinated drinks. That will make you very jittery. That's for paper 1. And paper 2, CSAT. CSAT mein, I am myself a humanities student and I am not a very good scorer at all in quantitative aptitude. If you are like me, if अगर आप humanities के हैं और आपको CSAT से maths का या logical reasoning is frightening you, तो फिर I would suggest that you start with the English comprehensions. If that is your strength, spend maximum time on those, read carefully, and pick the most reasonable option. Eliminate anything which says all or no. कोई भी extreme option अगर हो वहाँ पे reading comprehension में, उसे आप बहुत ध्यान से देखकर eliminate कर दें. And first go में, if you are like me, then CSAT में you should first do all the English comprehensions. Then when you get more and more like times through it, you should do first logical reasoning, and then if you can do quantitative aptitude, फिर आप maths के questions करें. Now, if you are good in maths and you have no fear about this, then you can proceed as normal. Even then, I would suggest you have to be fast because CSAT is deceptively long. So you may think it's less questions, but the amount of time required for reading comprehension for quantitative aptitude, it's not less. It adds up. So if you don't plan your time out, you will end up in a panic. Now, regarding the day of the exam also, I will suggest that try to get a good night's sleep. Please हो सके उससे पहले सो लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है. मेरे साथ भी, I have also suffered from this, that I could not often sleep before a prelim because it's the type of exam where you need very small details. So you keep thinking कि मैं कुछ छोटी सी detail पढ़ लूंगा, फिर मैं this might come. Instead of that, the day of the night before the exam, please try to get to sleep by at least like 10:30 because you will have to get an early morning start. If you have less sleep, then you will have an issue more so in CSAT. So my suggestion is that, other than that, go through your old notes, go through whatever you have done, and like I said, go through some selected compilations, whichever ones you find to be the best for you, like if they are easy to read or you like their format, and read as much as you can. Don't stick to just one source. Okay, then thank you very much. Yes, so ये मेरा, like I said, ये मेरा last attempt था
तो मुझे बीच में काफी जब फेलियर्स हुए तो मुझे निराशा तो होती थी, लाइक डिप्रेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सैडनेस तो इंसान पे आती है, एक एंजाइटी भी आती है अपने फ्यूचर के बारे में। लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मैं अपने जिंदगी में सबसे जो बड़ा काम अगर मैं कर सकता हूँ, कोई if some meaningful thing I can do, it is to do public service, and I was willing to give more, like as many attempts as possible. आप लोगों के ऊपर ये डिसीजन है कि आपका क्या मोटिवेशन है, क्यों आप ये एग्जाम दे रहे हैं। वो हर किसी का एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। माय पर्सपेक्टिव वाज कि आई वाज इंटरेस्टेड इन द इंडियन फॉरेन सर्विस, मुझे हमेशा इसमें जाने का इंटरेस्ट था। तो ये मुझे और कहीं से नहीं पॉसिबल था। आई हैड नो अदर वे टू गेट इनटू this type of vocation or this type of position. So therefore I was motivated despite the failure. तभी निराशा के बाद भी मैं चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे मदर फादर ने मेरे को हार्डशिप के थ्रू, मेरे को फैमिली ने, ब्रदर ने मेरे, दे ऑल सपोर्टेड मी। सब ने मेरे को मोटिवेशन दिया, सब ने मेरे को मोरल बूस्ट दिया। without your family, without your friend circle, it becomes very tough. So please don't cut off, अपने आप को बंद ना कर लीजिए सोसाइटी से। Be open with others. Don't be too much, don't get too serious with this also. View it as part of your life. It is something important, no doubt. It's a big endeavor. You are giving so many, like so much attention and so much time to it. But please उसको आप अपने लाइफ का एक पार्ट समझिए, पूरी लाइफ ना समझें। आप सक्सीड होंगे, जरूर होंगे। अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट में 10th रैंक पे ऐसे आ सकता हूं, तो आप तो अभी यू कैन डू एनीथिंग। सो यू डू नॉट बी फियरफुल। जो अभी प्रीलिम आ रहा है, इससे आप ना डरें। डोंट हेजिटेट, जस्ट गो विद अ गुड क्लीन माइंड, लाइक बी लाइट इन योर हेड एंड बॉडी। आराम से जाओ, बैठो, आपको जो आता है आप ठंडे दिमाग से आराम से वहां सर्कल करके डू दैट। एंड देन नेक्स्ट डे, प्रीलिम के अगले दिन, आप बस मेंस की तैयारी में लग जाओ। दैट इज ऑल। एंड if you do this, I will tell you, within 1 year or less than 1 year, you will also get a rank. So my best wishes with all of you. Thank you very much.